So the V model is in a further updated model of waterfall model. We have seen the waterfall model and there are some problems or disadvantage of a waterfall model. We have learned that what was the limitation or disadvantage of waterfall model. That is, yes, what was the limitations of, yes, we couldn't make any changes in, yes. So in a waterfall model, it will work only in a one step. Okay. At the first step, we will take the requirements of customer, all the requirements, and after that, we are processing on the whole model only once. Okay. So that disadvantage or limitation of waterfall model, we will overcome by this V model. So it is always better to introduce testing at every phase. Okay, जैसे waterfall model में हमने क्या किया था, firstly develop whole project and after that do the testing. Okay, but here in a V model at every step we are going to work uh, on testing purpose. Okay, so SDLC is nothing but these are the software development life cycles, and with these models are used for SDLC. SDLC is nothing but software development life cycles. So in this model, the testing activity gets started from the early phase of LDST, SDLC. यहाँ पे B model में क्या होता है, every step में whenever we are implementing any single model, at the every single model we are performing testing. But वैसे waterfall model में होता था नहीं, whatever the bugs and errors of the project we can find out all the bugs at the end level. But यहाँ पे क्या होगा, what B model में at every step we are going to perform this testing. So yes, can you see this diagram? Yeah. Huh. So this is the diagram of V model. It looks like a V shape. So that's why this model name as a V model. Okay. So for this first 5 steps are as similar with the waterfall model. That is, first one is requirement phase, next system requirements, then global design, that is designing phase, detailed design, implementation. Implementation is actual coding. Okay. So here, while we are implementing these 5 steps, so at the every step we should prepare the test, or we should create, or we should perform the test phase. Okay, so here is this diagram is visible properly? Yes, now is it visible? Huh. Okay, so at the requirement phase we should prepare preparation of acceptance test cases. So at every step here we are performing the different type of testing. So that testing name as a requirement phase में कौन सा testing होगा, acceptance test. System requirements में system test execution. Global designing में integration test cases. Integration and unit test. Unit मैंने बताया था आपको, what is mean by the unit case and what is mean by the integration test. Yes, मैंने बताया था, the whole project get divided into the multiple models. Okay, so that models are nothing but the units. Okay, and after the completion of implementation of that models, higher authority will going to combine that whole project. So combining that project or combining that models is nothing but integration. ये मैंने बताया था आपको, मुझे याद है. हाँ, in a development phase only I told us the how the unit models or the whole project get divided into the multiple models that are nothing but units, and as well as after the completion of implementation of every model, the whole that different models get combined into the single project, and that combining of that modules in a single project known as a integration. Okay, so global design and detailed design. Global design ये क्या होगा हमारा, this is the whole designing of a whole project, and detailed design is nothing but designing of a single module. Got this difference? Global design and detailed designing में difference क्या है? Yes, everyone.
Am I audible to you? Then give reply. Okay, got this different global design and detailed design. Global design is nothing but the designing of whole project, and detailed designing is nothing but the designing of a single module. Okay, so whenever we have performing global design, so at that time we will perform this integration test cases or integration testing. Integration testing is nothing but the testing of whole project. Okay, so before that, firstly we will do this unit testing. Unit testing is what purpose? Testing of whole single modules. Okay, so flow will work like a in a V shape. Firstly we are taking the requirement from the customer. After that the system requirement. System requirement and requirement में difference क्या है? Yes, what is the difference between requirement and system requirement? Any one of you? No? So the requirements is here. In a requirement step, we are collecting the requirements of a customer. And here in a system requirements, we are just finding out what systems we need to implement the project. So that is difference between system requirements and requirements. Here requirements of customer, and to implement that requirement of customer, what type of systems we need, so that included into the system requirements. After that global designing, that is designing of whole project. Next one detailed design, that is designing of a single modules. After that we will start actual implementation of project, that is nothing but coding part. After that completion of implementation, here firstly we will perform the testing on single module. Okay, after that we will combine that module, that is nothing but integration step. At the after the integration of that module, we will perform the testing of a integration, that is integration test cases. After that we will check system test cases, that is nothing but all the system requirements are fulfilling or not. And at the end, yes, whose mic is on, just unmute your mic. Okay, after that acceptance test case execution, that is nothing but our whole project whether fulfilling customers requirements or not. So that's why we are performing acceptance test execution. Got this V model, everyone? Yes. uh, yes, maybe the steps yes, show me, because the this steps could be the different. Okay, yes, share your page or whatever you are referring. Yes. Okay, nothing. एक second. हाँ, here first one is एक second, I couldn't see that properly. Yes, can you zoom in it? हाँ, see here first one is requirement modeling. So here also I told that first step is a requirement step itself. Yes or no? हाँ. So next कहाँ पे है? हाँ. So the next is architecture design. Architecture design is nothing but the whole system designing. Then component design is nothing but again unit designs.
कंपोनेंट डिजाइन मतलब हमारा whole project को we have divided into the multiple modules, so that modules are nothing but components of a whole system. So component, again component designing is nothing but detailed design of a project, yes or no? Next, code generation itself is known as a implementation. Yes, code generation step is nothing but the implementation of a project, no? Implementation मतलब क्या करते हैं हम लोग? We are generating the code, we are writing the code of that project. After that unit testing. Unit testing में मतलब मैंने क्या बताया हम अभी आपको? हर एक मॉड्यूल का डिजाइन टेस्टिंग, जो भी हमने प्रोजेक्ट को होल प्रोजेक्ट को डिवाइड किया है, so dividation of the whole project is nothing but modules. So modules testing is nothing but unit testing. After that integration testing is nothing but the whole project. हाँ, and acceptance testing to check the whether whole system fulfilling the customer's requirement or not. Yes or no? Got this, Nafil? Yes. Is there any confusion still? Do you have got this? हाँ, see here this, ये जो भी वी मॉड्यूल्स और जितने भी हम लोग मॉड्यूल पढ़ रहे हैं ना, उसमें जो भी स्टेप्स है ना, स्टेप्स का नाम में भी आपको थोड़ा सा डिफरेंट फाइंड आउट होगा, बट द मीनिंग इज सेम ओनली. गॉट दिस एवरीवन? हाँ, so you can refer any book, but just keep remember that the meaning of the every step should be the same. ओके, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ द रिक्वायरमेंट आपने इम्प्लीमेंटेशन लिखा तो वो गलत हो जाएगा, बट इंस्टेड ऑफ द रिक्वायरमेंट इफ यू राइट लाइक अ कस्टमर रिक्वायरमेंट, the meaning is same. Requirement itself is known as a customer requirement. Got this now everyone? हाँ. Yes. So in this V module, we are performing this different 4 types of different testing. So unit testing, just now we have learned that unit testing is nothing but testing of a single module. Then integration testing, preparation of integration test cases. So यहाँ पे integration testing is nothing but we are performing testing on what? Whole project. Yes. देन सिस्टम टेस्टिंग, प्रिपरेशन ऑफ सिस्टम टेस्टिंग, यहाँ पे हम लोग क्या चेक करेंगे? वेदर आवर होल सिस्टम इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट. एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, आवर होल प्रोजेक्ट वेदर फुलफिलिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट्स और नॉट. इज दैट क्लियर? वी मॉड्यूल में किसी को कुछ कंफ्यूजन है? So this model is known as a prototyping model. So the basic idea in a yes, screen is not visible. Is this? हाँ, एक सेकेंड. हाँ, yes, is it visible now properly for both the classes? एक सेकेंड. किसको नहीं दिख रहा है? बिकॉज आई कैन. हाँ, एक सेकेंड. ओके, चेक करो एक बार. ठीक है, मैं स्टॉप शेयरिंग करके फिर से शेयर करती हूँ. सेकेंड शिफ्ट को दिख रही है? ओके ओके, हाँ, तो मैं ठीक है स्टॉप करके. ठीक है, नो प्रॉब्लम. Is this visible now for both the shifts?
एक सेकेंड, एक सेकेंड। नेक्स्ट मॉडल है हमारा प्रोटोटाइपिंग मॉडल। सो प्रोटोटाइपिंग मॉडल इज दैट इंस्टेड ऑफ फ्रीजिंग द रिक्वायरमेंट बिफोर अ डिजाइन और कोडिंग कैन प्रोसीड। सो दैट इज नथिंग बट प्रोटोटाइपिंग मॉडल में हम लोग क्या करते हैं इन जनरल, अभी तक हमने क्या किया, फर्स्टली वी आर फाइंडिंग ऑल द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ कस्टमर एंड आफ्टर दैट वी आर स्टार्टिंग द एग्जीक्यूशन। बट प्रोटोटाइपिंग में क्या है, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग ऑल द रिक्वायरमेंट एट द सेम टाइम वी कैन स्टार्ट द डिजाइनिंग और कोडिंग। ओके, एंड आफ्टर दैट जैसे जैसे कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स फाइंड आउट हो जाएंगे वी कैन just implement that in a further. Okay, so prototype is developed based on the currently known requirements. Okay, जैसे कि prototyping is nothing but create a basic module of according to the requirements. Okay, जैसे भी जनरल मॉडल क्रिएट करना है। yes, my voice is clear? हाँ हाँ, okay. So prototyping is nothing but just find out the market demand or just just survey on market requirements, create a basic model, and after that when customer comes to you, okay, so developer can add the additional further modules or further implementation according to the customer requirement. So prototyping is nothing but it is developed based on currently known requirement, जितने भी currently known requirement है उस पे module create करना. So that is nothing but creating a basic module, and after that according to the customer requirement we can add the further systems or further implementation in that module. Is that clear? So see this definition here. So the prototyping is an attractive idea for a complicated and large system for which there is no manual process or existing system to help the determine the system requirements. So यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, prototyping जैसे basic जितने भी कस्टमर के रिक्वायरमेंट है उसके लिए एग्जिस्टिंग सिस्टम क्रिएट करके रखो, एंड आफ्टर दैट जैसे भी कस्टमर के एडिशनल अपडेशन आ जाएंगे उसके अकॉर्डिंग उसमें ऐड करना है हमें. ओके, so this is the diagram. Yes, is this visible? हाँ, is it visible now properly? हाँ. So again the flow of the steps will be same everywhere. जितने भी सारे मॉडल्स है फ्लो सेम ही रहेगा. ओके, सो फर्स्ट ये क्या फर्स्ट स्टेप है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग. रिक्वायरमेंट गैदरिंग इज नथिंग बट यहाँ पे वी आर परफॉर्मिंग द मार्केट सर्वे एंड जस्ट वी आर इम्प्लीमेंटिंग द क्विक डिजाइन. सो यहाँ पे क्विक डिजाइन इज नथिंग बट बेसिक डिजाइन ऑफ अ सिस्टम, and after that we are building prototype. Prototype is nothing but the basic system. Okay, and after that customer evaluation. So after that when customer comes to you, developer can evaluate or developer can improve your system by adding system requirement by the customer. ओके, आफ्टर दैट रिफाइनिंग प्रोटोटाइप. रिफाइनिंग प्रोटोटाइप मतलब जो भी बेसिक प्रोटोटाइप था उसमें रिफाइन करेगा कौन, डेवलपर. व्हाई, अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट. आर यू गेटिंग दिस और नॉट? हाँ, एक सेकेंड. फर्स्ट वन है दिस रिक्वायरमेंट गैदरिंग. रिक्वायरमेंट गैदरिंग यहाँ पे क्या होगा, developer will work market survey, and according to the market requirement developer will design system, simple system. Okay, and after that designing developer will implement a बिल्डिंग अ प्रोटोटाइप. प्रोटोटाइप मतलब यहाँ पे क्या हुआ, बेसिक डिजाइन जो भी किसी कस्टमर ने उनको नहीं बताया है, that is nothing but according to the market requirement developer will implement some project or some process, and that process known as a prototype. Got this? prototype मतलब क्या है? हाँ, so before customer comes to the developer
डेवलपर क्या करके रखेगा, प्रोटोटाइप बना के रखेगा. सो दैट प्रोटोटाइप इज नथिंग बट अकॉर्डिंग टू द मास्टर मार्केट रिक्वायरमेंट्स व्हेन डेवलपर creating any system before customer comes to him, that system known as a prototype. Okay, after that when customer comes to the developer, according to the customer requirement, according to the customer requirement, डेवलपर क्या करेगा, रिफाइन द प्रोटोटाइप. रिफाइन करेगा मतलब क्या करेगा, द डेवलपर विल make changes in the prototype. Refining a prototype मतलब according to the customer requirement, developer will change the project. Okay, एंड उसके बाद में वो क्या करेगा, फिर से जो भी उसका बेसिक डिजाइन ऑफ अ प्रोजेक्ट है उसमें चेंजेस करेगा. दैट इज क्विक डिजाइन. एंड आफ्टर दैट ही विल इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट. समझ में आ रहे स्टेप्स आपको, ये वाला, ये लूप समझ में आया. In this prototype model, this loop is important, and after that developer will develop the engineered product. Engineered product is nothing but final product. Got this, everyone? Hmm? So okay, so here, second. So here the advantages are given for the prototype model. So user are actively involved in development. How? यहाँ पे क्या है, द एडवांटेजेस, यूजर्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व. व्हाई यूजर्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द कस्टमर, users are nothing but the customers. According to the customer requirement, developer will develop the project. So that's why here users are actively involved. Since this methodology of working model of a system, working model of a system मतलब क्या है यहाँ पे, basically basic system is there and we are working, or developer is working on that basic system. That is nothing but users get a better understanding of system being developed. So user को क्या होगा, better understanding of system, कैसे system develop हो रहा है. Okay, errors can be detected much earlier. Why? Because पहले से ही basic system is there and we are just adding some additional properties into the basic system. So that's why हमें पहले ही परफेक्ट एक कोड है हमारे पास. सो वो परफेक्ट कोड में ही सिर्फ माइनर चेंजेस करके हमें क्या करना है, कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने हैं. सो दैट्स व्हाई हियर एरर कैन बी डिटेक्टेड मच अर्लियर. देन अगेन क्विकर यूजर फीडबैक. व्हाई? बिकॉज कस्टमर डेवलपर क्या करेगा, कस्टमर के सामने ही वॉट एवर द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स आर देयर, अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स सिस्टम में चेंजेस करते जाएगा. So directly customer can give the feedback to the developer at every step. After that missing functionality can be identified easily. Why? Because customer directly check करेगा कि उसके requirement fulfill हो रहे हैं या नहीं. So जो भी missing functionality है वो developer को बता देगा and according to that developer can add the missing functionality. Got this? The advantages of prototype model. The next is there could be the some disadvantages. So leads to implementing and then repairing way of building system. यहाँ पे क्या होगा, again and again we need to implement the code and again we need to repair the code. Why? Because customer के requirement अगर fulfill नहीं हुए then again उसमें changes करने पड़ेंगे. Again जो भी customer के requirement है according to that implement करना पड़ेगा. So this is the endless process. इन दिस प्रोटोटाइप मॉडल में जब तक कस्टमर फुलफिल नहीं हो जाते उसके सारे रिक्वायरमेंट्स, डेवलपर को ये जो भी स्टेप थे अगेन एंड अगेन रिपीटेटिव मैनर में करते ही रहना पड़ेगा. इज दैट क्लियर एवरीवन? So here we completed prototype model.
So the last part is remaining, that is selection criteria for the software process model. Okay, selection criteria is nothing but just listen here. So just now we have learned all these models. यहाँ पे अभी तक हमने कितने मॉडल पढ़े, 4 मॉडल पढ़े. So उसमें से कौन सा मॉडल परफेक्ट है for our use? So that is nothing but selection criteria for a software process. Just wait for 2 seconds. Sorry for interruption. Okay, so just now we have seen all these 4 models. So which will be the best module for our purpose? So that selection is nothing but selection of the process model. So आप लोग अभी मुझे बताओ कि हम कैसे प्रोजेक्ट और कैसे मॉड्यूल सिलेक्ट करेंगे जो भी बेस्ट होगा. What could be the selection criteria? Yes. हाँ. So that is nothing but just tell me the point कौन कौन से point हम लोग देखेंगे कि first one हमारा basic model basic steps है requirement step. So first requirement phase में हम लोग क्या check करेंगे? Yes, requirement first हमारा phase क्या है? requirement phase. So at every step every model हम लोग ध्यान में रख के हम लोग क्या check करेंगे? Whether that every model fulfilling requirement ability or not, or yes or no. हाँ, so waterfall model में requirement reliability check हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ, why? because first step हमारा क्या था waterfall model में, याद है? communication. Yes, so communication में just developer is noting down all the requirements of a customer, but whether he is checking that model is fulfilling the requirement of a customer or not, no. So first step is कौन सा होगा? requirement reliability. After that reuse of components. When we are using component, different types of component, so our model should be a reusable of component or not? Component should be reusable or not? Just tell me that. Yes, so component should be a reusable. So we are checking that हर एक मॉडल में चेक करेंगे हम लोग कि हमारे कंपोनेंट्स रीयूज हो रहे या नहीं हो रहे, बिकॉज कंपोनेंट्स आर नथिंग बट द हायर part of our system. Okay, so that component should be reusable multiple time. ऐसे नहीं होना चाहिए component एक ही बार हम लोग ने यूज किया. So यहाँ पे whenever we are talking about models और whenever we are talking about software project, so हमारे components क्या होंगे? functions, program, part of a program. So that part of a program should be a reusable. जैसे कि हमारा 1000 लाइन का कोड है, बट इन 1000 लाइन ऑफ कोड हम लोग ऐसे 50 लाइन है जो भी रिपीटेटिव लिख रहे हैं, बिकॉज डिफरेंट कंपोनेंट में रिक्वायर्ड है. सो हम क्या करेंगे? वो जो भी 50 लाइन्स है विच वी नीड रिपीटेटिव मैनर, we can create a function and we can use that function again and again. So that is nothing but our module or component of a system should be reusable. Okay, so we are checking while checking a or while selecting a process model, we are checking that whether our component are reusable or not. Yes or no? समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? Okay, so this is a homework for you people, that what could be the selection criteria. जैसे कि मैंने अभी दो बताए आपको, requirement reliability as well as component reusability. So ऐसे आपको कौन कौन से criteria है in while selecting a process model or process. Okay, what could be the selection criteria, आपको वो note down करने हैं. Is that clear? हाँ, so हाँ, एरर टेस्टिंग. यस, जैसे टेस्टिंग हमने कौन से मॉडल पे यूज किया? ओनली
अभी कौन सा मॉडल देखा? वी मॉडल में, यस, वेरी गुड. सो यस, सो वी मॉडल इज बेटर देन एनी अदर 3 मॉडल्स. व्हाई? बिकॉज बाकी थ्री मॉडल में हमने टेस्टिंग नहीं यूज किया था. सो यहाँ पे हम लोग ने टेस्टिंग यूज किया है. ओके, सो here we completed second chapter. Okay, now you tell me, have you got that, have you seen that PPT whatever I have shared in a classroom? हाँ, सो फर्स्ट चैप्टर के मैंने पीपीटी शेयर कर लिए हैं. आई ट्राई टू गिव द नोट्स ऑल्सो. यही वीक में मैंने नोट्स नहीं शेयर किए आपको. सो मैं ट्राई करती हूँ यही वीक में मैं शेयर करूँगी. देन सेकेंड थिंग, आज हमने सेकेंड चैप्टर कंप्लीट किया है, तो सेकेंड चैप्टर का मैं नोट्स एज वेल एज पीपीटी एज वेल एज असाइनमेंट्स भी आपको आज ही दे दूंगी, तो आपको वो कंप्लीट करना है. ओके, एंड यस, असाइनमेंट, वन मोर थिंग, असाइनमेंट लिंक आई हैव क्रिएटेड.